Assalamu alaikum. Welcome to lecture 20 of data mining. So we are into the last leg of our course. Last remaining 7-8 lectures are left. We are still discussing clustering. Clustering is a relatively large chapter where we had to discuss a number of techniques from different categories. So when we stopped last time, we were talking about graph-based clustering as well as graph-based clustering algorithms. So we'll start from there today and discuss one heuristic algorithm for graph-based clustering called Chinese whispers. Uh, uh, and then if we have time, we will start with cluster validation, which is actually the last topic in cluster analysis. So we had not talked about evaluating or validating clusters. So we'll be discussing that and we'll be looking at some techniques for verifying the quality of our clustering as well as our comparing clustering algorithms. So that's basically the agenda for today. We have a quiz as well at around 3. Uh, so I'll start with graph clustering as we did last time. So are there any questions? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये स्पीकर का इशू है। 1 मिनट मैं किसी को बुलाता हूँ, अभी 1 मिनट 2 मिनट में। All right. So a graph basically, a graph G is basically two things: vertices, set of vertices, and set of edges. सर Right? So vertices small vi would come would belong to the set V, and of course I is equal to 1 to n. So in the case of clustering, these n would be the objects. Each node, each vertex is an object. So each object is represented by a node or a vertex in the graph. And if an edge exists between two nodes, let's say Vi and Vj, if an edge exists between them, we have this pair Vi, Vj, that pair would then lie in the set of possible edges that represents the graph. Okay? So, so that's the basic structure of a graph and its relation to clustering of data sets. तो यार स्पीकर Objects are nodes. एक काम करता हूँ Edges थोड़ा represent relationship between nodes, which are of course objects. So we then also talked about the similarity matrix and its relationship to the adjacency matrix last time. We have a similarity matrix. This basically an n by n matrix, which has which basically contains a similarity between two objects. So let's say if you have some Sij, so this basically is a similarity between object I and j. Okay. So this matrix, if your similarity function is a metric or if it satisfies the symmetry property, this matrix would be symmetric, meaning that it would have similar values across the diagonal, the main diagonal. All right. So, so this similarity matrix can be thought of as an adjacency matrix. So S basically is essentially A, where A is the adjacency matrix for the graph G. Okay. So where each so each Aij basically is a weighted edge between vertices Vi and Vj.
And Vi and Vj, of course, represents object I and j. So there is a direct one-to-one correspondence between S and A. So given a similarity matrix, you can get an adjacency matrix that represents the same object in a graph. Okay. Uh, so we then talked about briefly about graph theoretic approaches or graph algorithms for graph partitioning, and we talked about the idea of min cut. So what is a min cut algorithm? Uh, so this algorithm basically partitions the graph G into two disjoint portions or parts by cutting edges with minimum minimum cost, which cost here basically similarity. So remember, each edge represents the similarity between two nodes, and the weight of that edge is the similarity. So if the similarity is low, it means that those two objects are not very close together or they're dissimilar, they're not proximal. So that's a good point to cut. So if we cut a graph by cutting all those edges whose sum of the edges that are cut is a minimum, then we get a min cut algorithm. So this algorithm uh, can be applied to split a graph into two. Each of those two splits would then become a cluster. And then you can recursively split each of those splits into further two splits and so on. So as such, you can get hierarchical clustering based on bisection. Okay? So hierarchical clustering can be obtained by applying min cut algorithm to the adjacency matrix or to the graph. Uh, so one problem with this algorithm is a computationally expensive. Although it is theoretically computationally expensive, and it scales with the number of edges. And of course, if you have many edges, this the computation of this min cut becomes computationally very expensive. So one of the good desirable characteristics, one of the things that we like to have in a graph before you apply any graph algorithm, including min cut, is that the graph should be sparser. It should not be fully connected, meaning that there are fewer edges. So by the way, if you have this similarity matrix as A, so you'll have a similarity, non-zero similarity between any two objects, unless those two objects are the same. Sorry, if those two objects are uh, the same, of course, the similarity would be high or maximum, which would, if you normalize, it's 1. If they're entirely dissimilar, it would be 0. But usually you wouldn't have anything that's entirely dissimilar. So you might have even a small value, a small similarity between uh, two objects that are very dissimilar, but you still have a small similarity value. Okay? So if you take the entire matrix and convert it into a graph, you will have a fully connected graph because you have basically non-zero similarity values. So one thing that we like to do is to try to make the graph sparser, meaning that try to remove some edges from the graph. So we will discuss two ways to make such graphs sparser. Okay? So basically,
So the first technique is basically thresholding the similarity. So let's say you can say that, okay, if similarity is less than, let's say, 0.2, then remove the edge. So in other words, if two objects are relatively dissimilar and their similarity is less than whatever threshold that you have specified, in this case 0.2, you remove the edge, or you go to the adjacency matrix and convert that value to 0. So if you have a value of 0 in adjacency matrix, means that there is no edge between the two nodes in the graph. So of course, this threshold is a user-specified parameter. If you increase this threshold, you get a more sparser graph, but then you will be losing more information. Uh, and if you decrease this threshold, you will get a denser graph, uh, but you will be retaining more information, but denser graphs would then uh, be more difficult to cluster. ठीक है? So by selecting an appropriate value for this threshold, you can make your graph sparser, and as such, you will be removing some edges, and your graph will become sparser. The other approach, which is sometimes preferred, is basically uh, the k nearest neighbor uh, approach. So in this case, you take each node, and depending on what k you have selected, you retain the edges for the top k most similar other nodes or objects to that particular object. ठीक है? So if you think of the graph is, sorry, if you think of the matrix, so matrix में आपके पास जो एक रो है, उस रो में सिर्फ let's say if k is 3, if you take k is equal to 3, for each row you will only have 3 non-zero values. The rest you will cause them to be 0, force them to be 0. सो इन अदर वर्ड, लेट्स से मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई आपके पास एक रो की वैल्यूज हैं, सिमिलरिटी हम लिख रहे हैं 0.1, 0.2, 0.5, 0.1, 0.5। लेट्स से ये आपके पास एक रो है, उसकी 4 वैल्यूज हैं विद अदर ऑब्जेक्ट्स। ऑफ कोर्स इसमें एक वैल्यू शायद 1 भी होगी। तो पहली वाली ले लेता हूँ 1। 1 सिमिलरिटी विद इटसेल्फ इज 1, लेट्स से नॉर्मलाइज्ड। लेट्स से एक और मैं ले 0.6। ठीक है, so if you want to retain the 3 that are most similar to this object, so we'll convert this to, we'll retain एक 5 रखेंगे, एक ये, तो एक आखिरी वाले 2 रखेंगे, और बाकी सारे हम 0 कर देंगे। So this would then be converted into, तो आपने जो टॉप के में नहीं आ रहे थे उनको 0 कर दिया। So you have removed those edges. So from the first node, you do not have an edge to the second node, and you do not have an edge to the, I think, the third node, the fourth node. सेकंड का नहीं है, तीस फोर्थ का नहीं है। ठीक है? Of course, by changing k, you can increase the sparsity or decrease the sparsity. So if you
decrease k. If k is equal to 1, you will get a more sparser graph. If k is higher, you get a more denser graph. Uh, so this approach, so from a graph perspective, for each node के जो edges हैं वो आपने top के edges retain कर लेने, बाकी edges आपने drop कर देने. So if I want to draw this, मतलब आपके पास एक ये नोड है, इसके एक दो तीन चार और एजेस पे जा रहे हैं, तो इफ ओनली इफ द सिमिलैरिटी ऑफ थ्री ऑफ देम, द हाईएस्ट टॉप थ्री जो होंगे इसमें वो आप रिटेन कर लेंगे. लेट्स से इसका 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 ये जो ऊपर था इसको आपने कट कर दिया, so you will delete that because its similarity is not among the top three similarities that are associating with this object. So you do this for each object until you get a sparse graph. So you repeat it for each node in the graph. So the good thing about this k nearest neighbor approach is you don't have to specify an absolute value of similarity for the threshold. So k is kind of flexible. Uh, if your object is in a sparse region, तो उसके फिर भी के नियरेस्ट नेबर्स आ जाएंगे. कोई डेंस रीजन में है तो उसके फिर भी के नियरेस्ट नेबर आ जाएंगे. ऑफ कोर्स उनकी सिमिलरिटी हायर होगी. तो इट इज एडजस्टेबल टू द सिमिलरिटी ऑफ द नोड्स अराउंड ईच particular object in your data set. So while in the case of thresholding, you have to specify a global threshold which will be applicable to every portion of your data set. Okay. So now you have converted your adjacency matrix and you have made your graph sparser. Then you can go ahead and apply min cut algorithm, which by the way we do not discuss in detail in this course, but you might find them implemented in various codes. So you can go ahead and apply, and then it will be somewhat more efficient. Okay. And what does min cut algorithm do? Separates the graphs into two, and then further you can apply it to each subgraph, and it will further separate into each subgraph. Then becomes a cluster. Okay. So any questions? So there are actually many other clustering algorithms that are based on the notion of graphs. Uh, so as a representative algorithm, I'll discuss one. It may not be the, you can say, the most popular out there, but it's very similar to the other uh, graph clustering algorithms that are out there. So this algorithm is called the Chinese whispers clustering algorithm. It has a funny name, Chinese whispers clustering algorithm. Okay, and these algorithms, these heuristic algorithms, are based on a notion of message passing, which we will understand shortly. Uh, and they work best when the graph is sparse. Remember, we talked about sparsity before as well. Sparsity is important for theoretical algorithms like min cut. They're also important for heuristic algorithms like Chinese whispers. Okay, so ideally, we like to have a sparse graph before clustering. Okay. Uh, so So let me describe the process of the algorithm and then we'll see the intuition behind it. So initially, so what is the initialization? So initialization is assign each object a different class label. So for example, if you have n objects, remember this is also a graph.
You have n nodes in the graph. हर एक नोड को एक डिफरेंट क्लास लेबल ले रहे हैं, मतलब 1 to n क्लास लेबल, n क्लासेस हैं शुरू में. सो लेट्स से आपके पास चार ऑब्जेक्ट्स हैं, A1 A2 A3 A4. So आपके पास A1 would belong to class 1, A2 to class 2, A3 to class 4, 3 and A4 to class 4. चार classes होंगी. Initially you assign each object to each class. Since you have a graph, then you basically do a repetition. So select each node at random. Uh, the original algorithm you can is best applied in a randomized fashion. Select a node randomly, ठीक है? And then assign the majority class of this node's neighbors to it. And basically, you have the end repeat here. Essentially, you repeat this multiple times until there is no change, until uh, no change in class assignment. So let me show you with the graph first. ये algorithm इस तरह का simple सा है, 2 3 4 lines है in pseudocode, but so let's say ये एक node है आपका, ठीक है? ये 1 इसको क्लास दिया, लेट्स से ये 2 है, और ये लेट्स से 3 है, और लेट्स से ये 4 है, ठीक है? So each node is originally given to its own class. हर ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट क्लास में है. तो आपने एक रैंडमली एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, लेट्स से 1 सेलेक्ट कर लिया. अब 1 के कितने नेबर्स हैं? 1 के 3 नेबर्स हैं, 2 3 और 4 हैं. और ऑफ कोर्स ईच ऑफ देम हैज ए डिफरेंट क्लास. मेजॉरिटी उसमें कोई नहीं है. 2 का भी 1 है, 3 का भी 1 है, 4 का भी 1 है, ठीक है? सो व्हेन देयर इज अ टाई यू हैव टू पिक 1. So, but there is another element to this algorithm which I did not discuss before. Remember, ये जो object 1 है, 2 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के, इनकी similarity values भी होंगी. Let's say ये 2 है, 2 के साथ similarity let's say 0.5 है, उसके साथ 0.2 है, और इसके साथ 0.1 है. So now the most similar object to 1 is actually 2. So weighted majority आपकी 1 की क्या है? So when you select this one object 1, जो पहले इसका label 1 था, इसको आप change कर देंगे 2 पे, because 2 is the most similar object class that is assigned to this, that is connected to this object 0.5. तो इसको हम 2 कर देंगे. And similarly randomly then we select a next object. लेट्स से हमने 2 सेलेक्ट कर दिया. 2 में आप देखा कि 2 के नेबर्स क्या हैं, और उसकी सिमिलरिटीज देखी, कौन सा मेजॉरिटी क्लास उसके नेबर्स में आ रही है. जो भी आ रही है तो वो इसको हम उसका लेबल चेंज कर देंगे. And we continue in this fashion until there is no change in the labels. And generally, if your graph is sparse and your data is clusterable, this labeling would converge. It will not change after a few handful of iterations over the entire data set. So remember, हमने हर एक ऑब्जेक्ट एक रैंडमली सेलेक्ट करना है. एक ऑब्जेक्ट रैंडमली लिया, इसके नेबरहुड देखी, ठीक है? इसके नेबरहुड में जो भी लेट्स से मैं कहता हूँ कि सिमिलरिटी सेम है, अनवेटेड ग्राफ है, तो लेट्स से ये 1 है, और ये 1 है, और ये 2 है. मेजॉरिटी वोट क्या है? 1 है, तो इसको हम 1 दे देंगे. लेट्स से वेटिंग भी है, एजिस के ऊपर वेट भी है, तो वेटेड मेजॉरिटी लेंगे हम, और उसका लेबल इसको दे देंगे. सो दिस इज डन. देन वी गो ऑन टू सम अदर रैंडमली सेलेक्टेड पॉइंट, और उसका हम देखेंगे मेजॉरिटी नेबरहुड में लेबल क्या है, और वो उसको असाइन कर देंगे. एंड वी कंटिन्यू इन दिस फैशन. So that is essentially what I have written here as the algorithm.
So we repeat, select one node at random from the graph, look at the neighborhood of that node, and using the similarity values as well, uh, whatever the majority class, weighted majority class of the neighbors is, you assign it to this class, to this node. Okay? And then you do this repeatedly for all the nodes and for multiple iterations until there is no change. So here we have done this using this uh, kind of stochastic approach, random approach, by changing the label of one node at a time. This algorithm can also be made deterministic by applying simple matrix operations. So ये ऊपर जो approach थी ये, which is preferred by the way in practice, but to understand this algorithm, you can also look at the matrix-based deterministic approach. In this case, so we have A as the adjacency matrix, ठीक है? But इसमें एक change है, so A I is equal to 0. Although one भी कर सकते हैं, remember we said previously A and S is same, similarity matrix है. So similarity of an object to itself is what? It's the maximum. Let's say normalized है तो 1 होगा. तो बट हम इस केस में हम आई जो नोड टू इटसेल्फ हम जीरो कर देंगे बिकॉज वो इट्स नॉट हेल्पिंग अस इन आवर क्लस्टरिंग. सो एक नोड है उसका एज बैक टू इटसेल्फ वो हम निकाल रहे हैं, उसको जीरो कर दिया हमने. सिर्फ बस वो जीरो कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज आपकी वही सिमिलैरिटी वैल्यूज है, वेटेड ग्राफ है आपका. सो फॉर ऑल आई, ठीक है. सो नाउ यू हैव दिस मैट्रिक्स ए, ऑफ कोर्स इसका साइज क्या है, n बाय n है. वी डिफाइन ए क्लास मैट्रिक्स और क्लस्टर मैट्रिक्स डी, इसका साइज भी n बाय n है, ठीक है. तो ये क्या चीज है? सो दिस क्लास मैट्रिक्स असाइंस ईच ऑब्जेक्ट टू ए क्लास. सो इसमें लेबल है. सो इनिशियली हम हर एक ऑब्जेक्ट को एक सेपरेट, बाय द वे इसमें यू कैन थिंक ऑफ द रोज एज ऑब्जेक्ट्स and the columns as class. So initially there are n classes. So so basically rows are objects. So columns are classes या cluster labels. ठीक है? So so they are potentially n classes and they are potentially n, of course they are n objects. So initially आपने सारे diagonals 1 कर देनी है, meaning that कि हर एक object is in its own class. So आपके पास जो ये matrix है इसका जो diagonal बनेगा इसमें सिर्फ वंस है शुरू में. तो इसका क्या मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट 1 है, इसका क्लास, इसका कॉलम 1 भरा हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1 बिलोंग्स टू क्लास 1. ऑब्जेक्ट 2 का कॉलम 2 भरा हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2 बिलोंग्स टू क्लास 2. ऑब्जेक्ट 3 का कॉलम 3 भरा हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2 3 बिलोंग्स टू क्लास 3 एंड सो ऑन. ओरिजिनली एंड ऑफ कोर्स ऑफ डायगोनल सारे आपने जीरो कर दिए. सो ओरिजिनली ये आपका मैट्रिक्स है, which is basically class assignment matrix or cluster assignment matrix for the data. And then you apply the algorithm, which is again a simple algorithm, or in this case now using matrix operations rather than operating directly on the graph. So, so basically what you do is you repeat as before. First of all, you compute the d new as the previous d old, you can say, multiplied by a. So A adjacency matrix multiplication है, ठीक है.
एंड देन इसको मैं प्राइम कर देता हूँ जस्ट टू डिस्टिंग्विश. So then d new, the actual d new is basically another operation max row of d prime new, and they basically until no change in d. ठीक है? The same algorithm, but now deterministic and applied through matrix operations. Is no longer stochastic or randomized. ठीक है? जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, जो हमने ऑपरेशन इंडिविजुअली ग्राफ पे किया था, एक नोड लेते थे उसका मैक्स लेते थे, वो ऑपरेशन इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैक्स रो से हो रहा है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सारी सिमिलैरिटीज एग्रीगेट हो जाएंगी डी न्यू में, डी प्राइम न्यू. अब डी प्राइम न्यू में हर रो में आपके पास वैल्यूज आएंगी. अब उस वैल्यूज में से आपने सिर्फ मैक्स वैल्यू 1 रखनी है, बाकी सारी जीरो कर देनी. सो फॉर एग्जांपल आपके पास डी प्राइम न्यू, लेट्स से आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आ गई हैं, 0.1, 0.5, 0.2 और 0.3. आप इसका जो मैक्स रो लेंगे तो यू विल बेसिकली गेट जो जो मैक्सिमम वैल्यू थी इस रो में, विच इज 0.5, वो 1 हो जाएगी, बाकी सारी जीरो हो जाएंगी. तो 0, 1, 0 और 0. तो ये आपके पास बन जाएगा. देन यू रिपीट द प्रोसेस. इन अदर वर्ड्स के जो मैक्सिमम सिमिलैरिटी जिस क्लास से आ रही है वो वाला कॉलम है, उसको हमने 1 कर दिया और बाकी सारे जीरो कर दिए. ठीक है? सो अब ये सेकंड कॉलम इसका 1 था, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट ये था, जो रो हो गया इसका, विच इज ऑब्जेक्ट नाउ बिलोंग्स टू, हैज द लेबल 2 और क्लास 2. ठीक है? सो यू रिपीट दिस अंटिल देर इज नो चेंज इन दिस मैट्रिक्स डी, मीनिंग दैट कि आपकी क्लस्टरिंग फिक्स्ड होगी. रिमेंबर डी इज द क्लस्टरिंग मैट्रिक्स और क्लास मैट्रिक्स. जब यहाँ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्लस्टरिंग आपकी कन्वर्ज होगी है, एंड देयर आर नो फर्दर चेंजेस इन योर ग्रुपिंग्स. सो जो फाइनल आपका जो डी होगा, दैट विल टेल यू द फाइनल क्लस्टरिंग. सो लेट्स टेक के 4 ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले रहे थे. लेट्स मी जस्ट हाइपोथेटिकली टेक एन एग्जांपल. सो लेट्स से 1, 0, 1. मैक्स रो एक ही होगा. वही वाला ले लेते हैं एग्जांपल. ओके. सो 0, 1, 0 और 0, ये एक है ऑब्जेक्ट. तो लेट्स से 0, 1, 0 और 0 और 1, 0, 0 और 0 और 1, 0, 0 और 0. अभी नोटिस दैट द सेकंड कॉलम में दो ऑब्जेक्ट्स 1 आ रहे हैं, द फर्स्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, और फर्स्ट कॉलम में 3 और 4 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं. सो एक्चुअली आफ्टर क्लस्टरिंग यू ओनली गॉट 2 क्लस्टर्स. दो क्लस्टर है. पहले क्लस्टर में ऑब्जेक्ट 1 और 2 है और दूसरे क्लस्टर में 3 और 4 है. ठीक है? सो दिस इज व्हाट दिस मैट्रिक्स इज टेलिंग अस. सो 2 clusters basically C1 contain object 1 and 2, and C2 contain object 3 and 4. ठीक है? So there are some column that all zeros. इसका मतलब है कि हमने जो ओरिजिनली हमने कहा था कि हर ऑब्जेक्ट इट्स ओन क्लस्टर, मीनिंग दैट n क्लस्टर्स हमने बनाए थे, वो कुछ क्लस्टर्स कोलैप्स हो जाएंगे और कुछ कॉलम्स एंड पे डी के सारे ऑल जीरोज हो जाएंगे. एंड देन वी जस्ट लुक एट द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. जहाँ 1, 1 आ रहा है वो ऑब्जेक्ट उस क्लस्टर्स में है. So this is
एक्चुअली द सेम एल्गोरिदम, वही जो पहले हमने एल्गोरिदम दैट वाज रन स्टोकेस्टिकली ऑन द ग्राफ, अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में किया है. तो डिटर्मिनिस्टिकली द एल्गोरिदम हैज some more convergence issues, but it's of course easier to apply. Matrix computation आप easily कर सकते हैं if you have a, let's say, program like MATLAB, एक वन लाइनर में हो जाएगा. ठीक है. So this is kind of the general idea of most heuristic based clustering algorithm based on the notion of graph. And this is one example, a representative example, which is Chinese whispers. And they all use the idea of message passing. और मैसेज पासिंग क्यों है? बिकॉज एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको जब देख रहे थे, हम देख रहे थे कि उसके नेबरहुड में क्या आता है, उनके मैसेजेस देखे हमने क्या हैं, उनके क्लास लेबल्स क्या हैं, वो मैसेजेस हैं. और उनका जो मेजॉरिटी मैसेज था वो इसको हमने इसके पास ले आए. एंड वी रिपीटेड दिस फैशन. सो एक्चुअली दिस चाइनीज विस्पर्स इज, द नेम कम्स फ्रॉम दिस. तो चाइनीज विस्पर्स इज बेसिकली यू कैन से ए गेम या ए चाइनीज गेम यू कैन से. सो एक कोई बच्चा एक किसी को कुछ और कुछ बात कहता है, वो बच्चा किसी और को कुछ बात कहता है, वो बच्चा किसी और को बात कहता है. तो अलोंग द वे थ्रू दिस नॉइजी चैनल वो इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट होती है एंड इट कन्वर्जेस इनटू, इट काइंड ऑफ कन्वर्जेस इनटू, क्या लें कि मतलब इट वुड चेंज ऑफ कोर्स बट इट वुड कन्वर्ज एज वेल. ठीक है. तो थ्रू द नॉइजी चैनल्स, उस आइडिया को लेके दे हैव डेवलप्ड दिस एल्गोरिथम. वी आर लुक एट द नेबरहुड, नेबरहुड में जो मेजॉरिटी क्लास है वो इसकी क्लास बन जाए, एंड देन यू रिपीट, एंड ओवर टाइम इट विल देन कन्वर्ज. So this algorithm, as I said, works well when you have sparse graphs. ठीक है. डेंस ग्राफ्स के लिए भी चल तो जाएगा, बट preferred for sparse graphs. One thing, uh, uh, it can run into convergence issues, meaning that के टाइज आ रही हैं बार बार आपकी, और टाइज आप रैंडमली ब्रेक करेंगे तो आपका कन्वर्ज नहीं होगा. एंड दिस इज मोर कॉमन फॉर द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. स्टोकेस्टिक में ले लेस कॉमन है. ठीक है. So this is another characteristic of this algorithm. So it does have some issues with convergence. But when it does converge, it usually converge in, let's say, 5-10 iterations. ज़्यादा नहीं लगती हैं iterations. What else? So K is not needed as input. So number of clusters आपने नहीं बताने start में. End पे आपको खुद ही वो जो भी natural clusters हैं उसमें वो आपको मिल जाएंगे. So this is actually a benefit. It's not a negative. ठीक है. Uh, One other characteristic which is on the negative side is, if you run this using the stochastic approach, you may get different clusterings uh, by running the algo multiple times. ठीक है. सो एक दफ़ा आपने रन किया तो एक डिफरेंट क्लस्टरिंग आ गई, दूसरी दफ़ा किया तो मे बी स्लाइटली डिफरेंट क्लस्टरिंग आ गई, तो सेम क्लस्टरिंग ज़रूरी नहीं आएगी. तो अगेन द इशू ऑफ ग्लोबल मिनिमा नहीं है, सो यू आर कन्वर्जिंग टू ए लोकल मिनिमा. ठीक है. इसकी complexity of course n square तक की जाती है, but generally if the graph is sparse as we said in the before, then the real time इसकी performance अच्छी ही होती है. And of course you can run this in a distributed fashion.
ठीक है ना। ईच नोड के आपने नेबरहुड बस देखना है, दैट्स इट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन इवन रन इट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट ग्राफ। सो इट कुड बी वेब पेजेस। सो फॉर एग्जांपल वेब पेजेस हो सकते हैं, इट कुड बी इवन users on social media and so on. ठीक है। and in this case the graph comes naturally sometimes। हमने पीछे जो एग्जांपल देखी थी, ग्राफ हमने फ्रॉम सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनाया था, बट समटाइम्स इन मैनी एप्लीकेशन ग्राफ्स कम्स नेचुरली। इन सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल आपकी कनेक्टिविटी नेचुरल है, वन यूजर कम्युनिकेट्स विद अनदर यूजर, तो दैट्स नेचुरल, कोई आपने आर्टिफिशियल कनेक्टिविटी नहीं बनाई। एंड ऑफ कोर्स उसकी जो वेट होगा उस यूजर की एज का, वो आप नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ कर सकते हैं, या कोई और आप मेजर यूज कर सकते हैं। if a user A communicates 10 messages to user B, 10 would be the weight of that edge. Okay, so these are some of the pros and cons and characteristics of Chinese whispers and other algorithms similar to this. So other algorithms that are similar, message passing based algorithm के नाम से भी एक, there's something called Markov clustering भी एक होती है algorithm, which is also known as MCL, which is very similar to Chinese whisper. ठीक है। और also एक algorithms है message passing clustering, दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दिस, थोड़ा थोड़ा फर्क है। सो ये चाइनीज विस्पर्स का जो एल्गोरिथम है, इट्स नॉट इन योर टेक्स्ट बुक्स, ये इसका एक पेपर है छोटा सा, वो मैं अपलोड कर दूंगा आपके एलएमएस पे, तो यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। सो ठीक है। सो आई थिंक दैट इज ऑल दैट वी वांटेड टू डिस्कस अबाउट ग्राफ बेस्ड क्लस्टरिंग। ठीक है। सो आई थिंक so we have covered a number of techniques in clustering and we have categorized them in different ways. So broadly speaking, we talked about different types of clusters. We talked about prototype-based clusters. We talked about graph-based clusters, and we talked about density-based clusters. And then we talked about different clustering algorithms. One was the hierarchical clustering algorithm. The other was partitional clustering algorithm. Okay. So, and among the various techniques, we of course discussed the k-means, k-medoids, k-modes. We talked about Birch, which is hierarchical. We talked about the simple agglomerative clustering algorithm. We also talked about DB-scan, which is density-based, which uses notion of density as for clustering. And then finally, we talked about graph-based clustering, and we looked at the algorithm called Chinese whispers in detail. Okay, so now let's move on to cluster validation or clustering evaluation. So cluster evaluation, you will find it in both textbooks. You will find it in the textbook by Han. So by Han, I think इसमें chapter 10 है, chapter 10 है, and you will also find it in the other book by उसका नाम इंट्रो टू डीएम जो बुक है, ऑथर का नाम फर्स्ट कुमार का पता मुझे, आई डोंट नो द अदर पर्सन नेम, 10 है शायद, डीएम। इसका ये चैप्टर और स्पेसिफिकली सेक्शन 7.5 है। ठीक है। So generally, I prefer actually this section 7.5 for discussing cluster validation. ठीक है। और ये chapter by the way available है freely on the web. So if you search for Introduction to Data Mining textbook, chapter 7 of the textbook is freely available as a PDF on the web. And within this chapter 7.5 covers cluster validation or evaluation. तो आप वहाँ से प्राइमरी फोकस आप उस पर कर लें और सेकेंडरी फोकस जो है इनकी बुक है उससे कर लें। ठीक है। By the way, Intro to DM is a good book actually.
if you want to buy one book, I would recommend that you buy that book. बट ये कि इसका पीडीएफ मेरे ख्याल से फ्रीली इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, हैंड की बुक का मिल जाता है आपको। राइट। Okay, so first of all, what is why do you want to evaluate clusters? So one we sometimes we say that clustering is often done as an exploratory analysis. So we often do clustering to try to understand or get a better idea of the data set, look at the groupings in the data set. So usually that is somewhat informal and you don't really need to do exhaustive evaluation for that. Okay? So if that is the case, then well and good, you don't need cluster validation or evaluation. But in other situations, you do need to make sure that the clustering that you have obtained are of higher quality. And there's a number of reasons that I've mentioned here why we need. So why we need cluster va- validation. So there are a number of points. So first point is uh, so so natural clustering tendency. So we want to know whether the data set does have any clusters or not. So usually जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है, आपका डेटा सेट होता है, आपको कुछ नहीं पता होता इसके बारे में. So does it have some natural clustering in it or not? So let's say आपके पास purely random data हो. Let's say so 2D में let's say आपने random data generate कर दिया, तो आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे evenly spaced. सो ऑब्वियसली इसमें कोई क्लस्टरिंग नहीं है, बट इसको ऊपर आप के मीन्स लगा दें, के मीन्स आपको दो क्लस्टर निकाल के दे देगा, रैंडमली ग्रुप कर देगा पॉइंट्स को, और जो पॉइंट्स नहीं आ रहे ऑफ कोर्स वो आउटलायर्स हैं. तो आपको क्लस्टरिंग में के मीन्स ने क्लस्टरिंग करके दे दी, आप बड़े खुश हो गए क्लस्टर्स दो हैं, बट लुक एट द ओरिजिनल डेटा सेट, इट्स प्योरली रैंडम, कोई क्लस्टर उसमें है ही नहीं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स हैं, यूनिफॉर्मली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स हैं. बट के मीन्स इसके ऊपर चलाएंगे तो आपके पास, बाय द वे मेरे ख्याल से ये आपकी असाइनमेंट में भी एक ये क्वेश्चन है. तो so you still get two clusters, but those clusters are meaningless. So we want to know where we want to make sure whether natural clustering tendency exists in the data or not. So another question that we want to ask is how many clusters? Remember the K. So कितने clusters naturally इसके exist करते हैं? So वही जो random वाला मैंने example दिया है, उसको k is equal to 2 से साथ करें तो वो k में दो clusters निकाल के दे देगा. k is equal to 10 के साथ करें, k में 10 निकाल के दे देगा. तो नेचुरल क्लस्टर्स में कितने हैं वो भी हमको किस तरह पता चलेगा? वी नीड टू समहाउ इवैल्यूएट द क्लस्टरिंग, द क्वालिटी ऑफ द क्लस्टरिंग. ठीक है. एंड देन आल्सो वी वुड लाइक टू कंपेयर द क्लस्टरिंग टू फॉर एग्जांपल द सिमिलैरिटी. सो इन अदर वर्ड्स, जो हमको क्लस्टरिंग आ गई है, वी वांट टू मेक श्योर हाउ डज दैट मैच टू द सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, और जो हमारा नोशन सिमिलैरिटी का है, डज इट कॉरिस्पॉन्ड टू इट. लेट्स से हमारी सिमिलैरिटी कह रही है कि ये दो ऑब्जेक्ट की सिमिलैरिटी हाई है, बट हमारी क्लस्टरिंग में दोनों को सेपरेट में रखा हुआ है. सो दैट्स द बैड थिंग, बिकॉज इट शुड रिलेट टू द सिमिलैरिटी. जब दो ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं तो वो एक ही क्लस्टर में होने चाहिए, दो ऑब्जेक्ट डिसिमिलर हैं वो डिफरेंट क्लस्टर्स में होने चाहिए. तो ये भी इवेल्युएशन थ्रू क्लस्टरिंग वैलिडेशन ही आएगी. एंड देन ऑफ कोर्स कंपेयरिंग मल्टीपल एल्गोस. तो लेट्स से आपके पास दो एल्गोरिथम्स है, ए के मींस है, दूसरा डीबी स्कैन है. के मींस ने एक क्लस्टरिंग दे दी, डीबी स्कैन ने एक क्लस्टरिंग दे दी. हाउ डू यू नो दैट विच वन इज बेटर? So again you need validation. And also again comparing
टू क्लस्टरिंग्स। ऊपर तो एल्गोरिदम था, टू क्लस्टरिंग। लेट्स से आपके पास क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स की आउटपुट नहीं है, सिर्फ क्लस्टरिंग्स की आउटपुट है, आउटपुट रिजल्ट्स हैं कि ये दो ग्रुपिंग्स हैं। अब आपने देखना है कौन सी ग्रुपिंग्स बेहतर है। So again, these are some of the questions that would be answered by a systematic study of cluster validation and evaluation. ठीक है? So the techniques in cluster validation are generally unsupervised, supervised, and you can say both. So the techniques that are used for validation can be unsupervised or supervised or use elements of both. ठीक है? Unsupervised का मतलब क्या है? No external info regarding labels या classes. ठीक है? So we want to evaluate the clustering without knowledge of any groupings or labels or classes for the data set. So external info, so e.g. classes is available. ठीक है? So let's say uh, आपके पास कोई स्मॉल डेटा सेट है जिस पे आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट क्लास 1 में या एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ये ऑब्जेक्ट ग्रुप 2 में बिलोंग करते हैं। उस डेटा सेट पे आप क्लस्टर करेंगे और देखेंगे कि हाउ डज योर क्लस्टरिंग मैच विद दैट labeling of yours that you already have. Okay, so this would be supervised. And then some techniques involve both techniques, both ideas. We will discuss those. Actually, there are not many of those. We will mention them briefly later on. Okay. So let's first start with unsupervised. So again, what is an unsupervised approach for evaluating clusters? We do not use any external information. We have only the n objects and their similarity matrix. That's all we have. We don't have any labels or other groupings for these n objects or for any similar objects from this same distribution. जनरली यही दो चीजें आपके पास होती हैं, एन ऑब्जेक्ट्स होती हैं, सिमिलैरिटी मोटिव्स होती हैं जब आपको क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगा रहे होते हैं। ठीक है ना? So the measures in this category are unsupervised and they are also sometimes called, as I said, intrinsic measures because no external information is used. And these measures are sometimes further categorized as cohesive. By the way, these are basically uh, cohesive, based on cohesion and based on separation. ठीक है? So let's take an example, वहां से आपको समझ आएगी ज़्यादा बेहतर. So let's say our clusters are described by prototypes. ठीक है? Prototype क्या होता है? Each cluster described by a central point. So a measure of cohesion for one cluster. By the way, these measures can be applied to one cluster, to one object, to all the clusters in a clustering. Okay? So let's say if we talk about one cluster, so the sum of, you can say, distances of objects to their to its uh, prototype would then be a measure of cohesion. ठीक है? तो क्या कर रहे हैं हम इधर? तो बेसिकली आपके पास लेट्स से ये क्लस्टर है, उसका एक ये प्रोटोटाइप है बीच में, वो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. The sum of all the points के distances to this would be a measure of cohesion. अब cohesion, let's say एक और क्लस्टर है, let's say ये छोटा क्लस्टर है, इसमें पॉइंट्स है, इसकी कोहिजन की वैल्यू थोड़ी होगी. इसकी कोहिजन, लेट्स से ये कोहिजन 2 है और ये कोहिजन 1 है, तो कोहिजन 2 इज लेस देन कोहिजन 1.
So generally, smaller cohesions are preferred, or that tells us that the cluster is a better cluster, meaning that sum of the distances from its centroid or the prototype is smaller. ठीक है, of course you will have to normalize this, and so ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, थोड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे, नॉर्मलाइज करेंगे बाय द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, if you are comparing two objects, two clusters with different number of objects. So this would be a cohesion प्रोटोटाइप के सेंस में, और सेपरेशन में के सेंस में क्या होगा. लेट्स से आपके पास दो क्लस्टर्स हैं, एक क्लस्टर ये है और एक क्लस्टर ये है, इसका यहाँ और यहाँ, तो इसका जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर्स, दिस वुड बी सेपरेशन. ठीक है. ठीक है. So if you recall, the objective function that we used in the k-means clustering algorithm was actually a measure of cohesion, right? So the k-means objective was a cohesion measure. What we were doing was we're taking the sum of each object from its prototype, from its centroidal or mean position, and we are summing it for all the objects in the cluster, in the clustering. A smaller value would then mean that you have a better cluster. A larger value would mean that you have a poorer clustering. So sometimes जब आप Euclidean distance use करते हैं, and you use Euclidean distance to measure distance of each object to its mean, we call that measure SSE as well. इस book में भी use किया हुआ है, the sum of squared errors. ठीक है. एरर क्यों है? एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इज कंसिडर्ड एज ए एरर, तो इसको एसएसई भी कह सकते हैं. एंड यू सम इट ओवर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. यूक्लिडियन डिस्टेंस आप ले लें, एंड देन you can square that, and so that would become the sum of squared error. So I think I will probably stop here. यहाँ से we will continue next time, and we will finish this cluster validation in the next lecture. उसमें कुछ चीज़ें हैं that we'll be discussing, and we will try to finish it in the next lecture. Any questions? Any questions? So if you don't have any question, then you can prepare for the quiz then. We have a quiz today. This is going to be a 7th quiz. So we'll be having a quiz now, inshallah, every Tuesday for the next 2 weeks. So 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 9 will stop at 9. तो and if you do 9 quizzes, तो आपके 2 drop हो जाएंगे, n-2 policy apply हो जाएगी.